Namaskar and welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आप सभी का स्वागत। अगले आधे घंटे तक हम लाएंगे आप तक आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरें, साथ ही उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ ऑनलाइन विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Vishal. Yes, the headlines first. Central government approves PM E-Bus Seva scheme with a spend of more than 57,000 crore rupees. 10,000 e-buses to be deployed in 169 cities. Union government also approves PM Vishwakarma scheme with a financial outlay of 13,000 crore rupees to support traditional artisans and craftspeople. Centre gives nod to expansion of Digital India program with an outlay of around 15,000 crore rupees and key domestic indices witness modest gains. केंद्र सरकार ने 57,600 करोड़ रुपए से अधिक की पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी। 169 शहरों में 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहयोग देने के लिए नई केंद्रीय योजना पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने लगभग 15,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को भी मंजूरी दी और प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में हल्की बढ़त दर्ज। सेंसेक्स 66,500 से ऊपर और निफ्टी 19,450 अंक के स्तर से ऊपर हुए बंद। सबसे पहली खबर, सरकार ने शहरों में ई बसों की सेवा बढ़ाने के लिए पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दे दी है। शुरुआत में इसके अंतर्गत 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि पीएम ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये योजना केंद्र शासित प्रदेशों, पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पर्वतीय राज्यों की राजधानियों सहित 2011 की जनगणना के अनुसार 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में लागू होगी। श्री ठाकुर ने कहा कि पीएम ई बस सेवा से पर्यावरण अनुकूल यातायात व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इससे 45,000 से 55,000 प्रत्यक्ष नौकरियां भी सृजित होंगी। इन इलेक्ट्रिक बसों से ध्वनि और वायु प्रदूषण में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। हमारे साथ आज कार्यक्रम में चर्चा के लिए ऑनलाइन मुंबई से जुड़े हैं अविनाश गोरक्षकर जी, आर्थिक विश्लेषक हैं। अविनाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। गुड इवनिंग जी। अविनाश जी, सबसे पहले हमारी जो आज पहली बड़ी खबर है कि सरकार ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी है और इस पे काफ़ी अच्छा खासा सरकार पैसा भी खर्च करने जा रही है, धन भी खर्च करने जा रही है। ये जो योजना है, ये क्या, एक तो हम देखें तो प्रदूषण, पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम तो है ही, लेकिन क्या इससे आपको लगता है कि जो हमारा जो ऑटो सेक्टर है उसको भी बढ़ावा मिलने जा रहा है इस योजना से? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो कदम गवर्नमेंट ने उठाया है वो बहुत ही एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और इससे नॉट ओनली हमारा पेमेंट बचेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो बड़ा ऑर्डर है, जिस प्रकार से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये काफी प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनियां हैं जैसे कि जेबीएम ऑटो है, अशोक लेलैंड है, जो ये कंपनी ये प्रोडक्ट्स बनाती है, इनके लिए काफी फायदेमंद बात है। ये दूसरी बात है कि इम्प्लीमेंटेशन कितनी तेजी से होगा, लेकिन गवर्नमेंट का जो विचार है और जो लक्ष्य है वो डेफिनेटली एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां है, स्पेशली ये प्रोडक्ट जो बनाती है, इनके लिए काफी फायदेमंद बात रहेगी। तो आने वाले 1-2 सालों के लिए आपको अच्छी खासी ग्रोथ इस सेगमेंट से आपको देखने को मिलेगी और काफी और रेवेन्यू पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। Avinash, in the last 2 budgets that our Honorable Finance Minister Ms. Nirmala Sitharaman presented, both the budgets she talked about incentives to be given to electric vehicles, and
it seems that the time is now ripe because we are also largely electrified. The whole country is electrified. So that, and along with the fact that we are now, you need charging stations. So do you think that our infrastructure is now in place and the time is ripe for a commercial e-bus seva scheme? Because so far we were talking about scooters and cars as far as electric vehicles are concerned. You think we are now poised to have it and we can accommodate 10,000 e-buses as has been envisaged in this PM e-bus seva scheme? Yeah, I think, the proposal for 10,000 commercial e-buses is definitely a good, sign. I think it shows the government's commitment to protecting the environment and promoting the, electric vehicle kind of proposition in the country. But you must realize that, execution and implementation is something which is going to take time. Our sense is that, we could see this progress, gradually. Because even manufacturers have to be ready and fit, to supply such a large number of buses at a reasonable time frame. Right. So I think it's a good move, but yes, it's going to take a slightly medium-term horizon to get it implemented. जी, रुक करते हैं अगली खबर का। सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहयोग देने के लिए नई केंद्रीय योजना पीएम विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य हाथों और औजारों के जरिए काम करने वाले शिल्पकारों और कारीगरों की पारंपरिक कौशल को मजबूती और बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने 5 वर्ष की अवधि के लिए इस योजना को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री कृपया इसको दोबारा सुन लें। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत शुरुआत में 18 पारंपरिक उद्योग धंधों को शामिल किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। So, Avinash, this is in the direction of skilling India, but also as the Prime Minister focuses on upskilling and upscaling, this is also another aspect to it, another perspective to it, that we want to preserve our traditional skills. And much of our skills our children learn because they are part of the family. It goes from generation to generation, like we have the patola saris and many, many crafts. So do you think this is a step in that direction and it will kind of promote our traditional skills? Developed countries, developed world doesn't have much of craftsmanship to show off. Our country, Asian countries and particularly our country, has tremendous scope of craftsmanship. How do you view this whole incentive? No, I think it is definitely a good move. It will always also help the artisans and the small scale industries in our country. Considering the fact that the government wants to increase employment and obviously increase the scope of the business for such small scale businesses, I think it's a very good move. And at the same time, it will also ensure that the domestic skill sets of our artisans and small scale industries would be monetized in the right way. So it's definitely a longer term good move. Of course, the question is of implementation, but I think the intention is right, and we'll have to see how execution takes off. जी, और योजना के अंतर्गत 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण देने की भी बात कही गई है। कितना महत्वपूर्ण है ये? बेसिकली देखिए, ये जो इंसेंटिव है ये डेफिनेटली शुरुआत में काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटे उद्योगों को और छोटे जो कारीगरों के लिए ये एक बहुत बड़ी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस रहेगी। अभी गवर्नमेंट भी चाहेगी कि जितना सपोर्ट वो दे सके उतना इनिशियली वो दे देंगे, क्योंकि बिजनेस अभी काफी मात्रा में छोटा है। जैसे बिजनेस बढ़ेगा उसके बाद गवर्नमेंट सोचेगी कि एक इंसेंटिव कंटिन्यू करे ना करे, लेकिन अभी एटलीस्ट कम से कम आने वाले 2-3 सालों की जब तक बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं आती और पोटेंशियल ज्यादा है, तब तक मेरे ख्याल से ये सारे जो इंडस्ट्रीज है इनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत काम में आने वाला है। All right, let's move on. Well, Vishal, do you know that the G20 countries are getting together today in Bengaluru to talk about the digitization of governance and of the global, at a global level. Here, let's talk about Digital India. The centre has approved the expansion of the Digital India program with an outlay of 14,903 crore rupees. Briefing reporters after the Union Cabinet meeting, Communications and IT Minister Ashwini Vaishnav said the Digital India program was started in 2015 and it has brought a big change in the life of the poorest of the poor. He said under the project, 6,25,000 IT professionals will be reskilled and
upskill. Well, we were just talking about skilling, isn't it, Vishal? Mr. Vaishnav said that 265,000 persons will be trained in information security under the Information Security and Education Awareness Program. He said 1,200 startups will be supported in Tier 2 and Tier 3 cities. Ashwini ji, how do you see this incentivization of the Digital India program when we are now talking about 625,000 IT professionals to be reskilled and upskilled? That's a massive number. Yeah, I think definitely it's a very big number. I think it shows the intention of the government to actually propagate, digital India in a very big way. Of course, upskilling and making 6 lakh people accessible and using their skill sets is going to be a very big opportunity. This is going to be seen over the next, say, 3 to 4 years. I think it clearly spells out the government's thought on digital India and what kind of benefits it can bring to the Indian economy in general and to the masses. So I think a very good move. But yes, again, it's a very gigantic target, which I think it's going to take at least the next 2 to 3 years. So we'll have to wait and watch how implementation is done on ground. जी अविनाश जी, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि डिजिटल इंडिया जो सरकार की जो पहल है और 2015 में शुरू किया था ये प्रोग्राम, अब इसको विस्तार दिया है। इस पूरी अगर हम पिछले 9 सालों का अगर हम इस योजना पर के सफ़र पर नज़र डालें तो वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन में इस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा पिलर और सबसे बड़ा जो प्रोत्साहन था वो फाइनेंशियल इंक्लूजन ही है। पहली बात तो जनधन के अकाउंट जब खोले गए तभी इस फाइनेंशियल इंक्लूजन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद यूपीआई आ गया, उसके बाद रुपए आ गया। तो ये ऐसे कदम गवर्नमेंट ने उठाए इससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से बहुत सारे लोगों को डिजिटल इंडिया से वो कनेक्ट कर पाए। उनकी जो पेमेंट की या स्पेंड करने की जो आदतें थी वो उन्होंने और एनकरेज कर दी। और आगे भी मुझे लग रहा है कि इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। डिजिटल इंडिया का प्रोग्रेस और भी तेजी से बढ़ेगा और फाइनली इसमें ग्राहकों का, कस्टमर्स का और कंपनीज सारे सेगमेंट्स का फायदा होना चाहिए। तो डेफिनेटली फाइनेंशियल इंक्लूजन तो शुरुआत हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ कंट्री में और भी स्कोप है जो लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाना जरूरी है। तो डिजिटल इंडिया विल बी अ वेरी बिग काइंड ऑफ फैसिलिटेटर, ऐसे मुझे लगता है। Yeah, absolutely. Well, the Reserve Bank of India has said that according to a study, India's digital economy grew 2.4 times faster than the overall economy. And other statistics, let me just kind of boast. India's digital economy has seen tremendous growth in the past decade. A growing user base of 800 million plus internet users, over 107 unicorns with a valuation of $340.79 billion. That's really, really huge. So this is a right decision at the right time, right? Yeah, it is the right decision at the right time because obviously, that is going to connect the masses with Digital India in a big way, increase their access to, financial inclusion in a very simple and effective manner. And I think, decisions like the UPI, decisions like the Jan Dhan accounts, decisions like the RuPay have all made it possible. So government is now wanting to accelerate all these measures and, increase their target audience within the country. Yeah, apart from improving governance, Avinash, it also helps in kind of controlling black money circulation and improves governance and it brings efficiency to the whole system, isn't it? Exactly. I think financial inclusion and obviously, ensuring that there is transparency in transactions, and which you mentioned rightly that Digital India is the first step to ensure that, all transactions are recorded properly and there is no element of any incompetent kind of decisions taken earlier. So now I think, with the direct beneficiary transfer and with this kind of digitization, I think we should see better and better kind of corporate governance in all the governments as well as private sector kind of transactions. Yeah, actually, the government has saved lakhs of crores of rupees because of direct bank transfers and no middlemen now being involved. Let's move on. This is a story on the Cabinet Committee on Economic Affairs. They today approved 7 projects of the Ministry of Railways with an estimated cost of around 32,500
500 crore rupees with 10% funding from the central government. The proposals of multi-tracking will ease operations and reduce congestion, providing the much required infrastructural development on the busiest sections across the Indian Railways. The projects will cover 35 districts in Uttar Pradesh, Bihar, Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Odisha, Jharkhand and West Bengal. These will increase the existing network of Indian Railways by 2,339 kilometers and provide employment of more than 7 crore man-days to the people of the states. Your comment, Avinash ji? No, I think definitely this is a good move. I think more importantly, I think again it's a question of implementation, but I think the government has done the right job. जी, और ये जो फैसला लिया है 32,500 करोड़ रुपए की लागत से, ये अनुमानित लागत है इसकी, और ये कई परियोजनाएं हैं और मल्टी ट्रैकिंग, और इसके अलावा जो ट्रैफिक है, कंजेशन है, उसको कम करने की दिशा में काम होगा। सरकार पहले से भी हम देखें तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर भी काम करती चली आ रही है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आप इस फैसले को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आगे ले जाने में? देश की अर्थव्यवस्था को, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को आगे ले जाने में कितना मददगार साबित होने वाला है ये? नहीं, बिल्कुल, देखिए लॉजिस्टिक और जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है इसके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो जीडीपी से क्लोजली रिलेटेड होता है। कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती है तो कंट्री का लॉजिस्टिक सेक्टर भी उसके साथ बढ़ता है। मेरे ख्याल से ये जो कदम गवर्नमेंट ने उठाया ये डेफिनेटली आने वाले 2-3 सालों में हमारा डोमेस्टिक लॉजिस्टिक सेक्टर को और भी प्रोत्साहन देगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ने में काफी पोटेंशियल रहेगा। तो डेफिनेटली अच्छा कदम है, और मुझे लग रहा है कि काफी हद तक गवर्नमेंट ने ये बड़ा इन्वेस्टमेंट जो अनाउंस किया है, ये बात का कॉन्फिडेंस है कि वो ये सेक्टर को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। आगे कम से कम 3-4 सालों में इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर ग्लोबली काफी वेल पोजीशन्ड होगा अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट प्रपोज करेगी। जी, रुक करते हैं शेयर बाजारों का। प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज दोपहर बाद के कारोबार में तेजी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 65,500 के निशान से ऊपर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19,450 के स्तर से ऊपर जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स 138 अंक की वृद्धि से 0.21% बढ़कर 65,539 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 30 अंक की बढ़त से 0.16% चढ़कर 19,465 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.25%, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.52% की बढ़त के साथ बंद हुए। The key domestic share indices today witnessed modest gains. The BSE Sensex closed above the 65,500 mark, while the NSE Nifty finished above 19,450 level. Both indices added marginally, even as the cues from global share markets were negative. The Sensex gained 138 points or 0.21% to end at 65,539. The NSE Nifty also rose 30 points or 0.16% to settle at 19,465. In the broader market at the BSE, the mid-cap index added 0.25%, while the small-cap index gained 0.52%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 18 companies appreciated, while those of 12 declined. Ultratech Cement rose 2.4%, NTPC gained 2.1%, and Tata Motors advanced 1.9%. On the other hand, Tata Steel declined 1.9%, Bharti Airtel slumped 1.1%, and Bajaj Finserv fell 0.9%. In sectoral indices at the BSE, 13 sectors gained while 7 logged losses. Realty sector rose 1.1%. Utilities and power, both indices gained 1% each. On the other side, metal index declined 1%, while telecommunications slipped 0.9% and services fell 0.6%. The overall market breadth was negative as shares of 1,814 companies appreciated and 1,825 companies declined. A total of 118 shares remained unchanged. Avinash, we've been seeing the Sensex hovering around 65,000 plus minus for a long time now. Are the days of volatility over, considering also the fact that we are now the fastest growing economy in the world and the 5th largest economy in the world? Does that give us a kind of stable outlook for future?
Yeah, I think the markets are definitely, I think the volatility factor is yet got to be fully discounted, as I believe, the second half of FY24 is going to be a lot more volatile with a lot of state elections and general elections expected next year. I think markets will be volatile, but as I think there are going to be a lot of stock-specific opportunities which investors can capitalize. So I think, in today's markets also we have seen the index going down, but the broader market, we've seen a lot of stock-specific upside moments, which I think clearly indicates that the broader market will obviously improve. But yes, the index will now properly consolidate and then take off at higher levels over a period of time. जी अविनाश जी, ये जो घरेलू और जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं हैं और जो बढ़ती महंगाई के कारण जो है जो ब्याज दरों में कटौती शुरू होने में आपको लगता है देरी हो सकती है, और इस देरी की वजह से ग्रोथ पर भी थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है और अल्टीमेटली वो बाजारों पर भी देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी उम्मीद तो पहले थी कि आरबीआई रेट कट जल्दी काटेगा, लेकिन जिस प्रकार का सीपीआई का नंबर आ गया है, डब्ल्यूपीआई का नंबर आ गया है, इससे एक बात तो क्लियर है कि इंटरेस्ट रेट काटने का समय शायद थोड़ा और लंबा हो जाएगा। दूसरी बात, आपने इन्फ्लेशन की बात की, तो इन्फ्लेशन अभी भी आरबीआई के कंफर्ट के लेवल के ऊपर है। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी सेक्टर देखिए या टिपिकली ऑटो सेक्टर देखिए, तो वहां पे ऑलरेडी हाई इंटरेस्ट ब्याज के रेट्स के कारण डिमांड में थोड़ा सॉफ्टनेस देखने को मिला है। तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स मार्केट के लिए एज वेल एज सेक्टर के लिए थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे। ग्रोथ डेफिनेटली आएगा, बट ग्रोथ का जो मोमेंटम है और जो ग्रोथ का मात्रा है वो थोड़ा सा डेफिनेटली कम होने की उम्मीद है। तो ये बात डेफिनेट है कि इंटरेस्ट रेट्स काटने के लिए शायद हमको अक्टूबर-नवंबर तक रुकना पड़े, उसके बाद ही इंटरेस्ट रेट्स कटवाने की बातें शायद प्रॉपरली लॉजिकल दिखी। जी, और आज मेटल शेयरों में हमने गिरावट देखी है, ये इसका क्या कारण आपको लगता है? कि चीन से जो मांग में कमी की खबरें आ रही हैं वो भी एक कारण है जो मेटल शेयरों में हम गिरावट देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, चाइना का जो मार्केट में, मेटल मार्केट में जो प्रेजेंस है वो पिछले 3-6 महीने से बहुत ही खराब हो चुका है। चाइना का इकोनॉमी भी बहुत प्रॉब्लम में है, इसीलिए चाइना मेटल मार्केट में बड़ी मात्रा में उतरा नहीं, और जब तक वो मार्केट में आता नहीं है तब तक ग्लोबली मेटल प्राइसेस, जो फेरस नॉन फेरस मेटल्स है, वहां पे आपको कटौती देखने को मिलेगी। हमारा मानना है कि देखिए में हो सकता है कि सितंबर और दिसंबर का क्वार्टर में आपको कंटिन्यूअसली थोड़ा सा सेल ऑफ और थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब तक ग्लोबल मार्केट में ग्लोबल प्राइसेस मेटल के बढ़ते नहीं है तब तक यहाँ पे कोई भी मेटल शेयर चलेगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। Is the rural inflation higher than the urban inflation? If yes, is it because of the monsoon? I think it's a very early call to take. I think the monsoons arrived late, but they have been, more than sufficient pan-India. My sense is that post-September, I think we'll have a better assessment of what is the impact of monsoons. But in a very broader sense, I think the monsoons have been very normal, and I think it now depends on how, this monsoon is going to percolate into rural demand. If rural demand picks up, then you're going to see a lot of expansion in demand for FMCG, autos, two-wheelers, because, that is the pocket where a lot of demand gets generated from the rural market side, especially, pockets like agrochemicals, fertilizers, nutrients. So I think you'll have to wait till September end, after which we can get a better assessment. जी, और आईटी सेक्टर के बारे में आपका क्या आउटलुक है आने वाले समय में? देखिए, आईटी सेक्टर में मुझे लग रहा है कि कम से कम 1 या 2 क्वार्टर्स चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि अभी भी यूएस और यूरोप में जो डिमांड ट्रेंड्स हमको दिख रहे हैं वो ये दिख रहे हैं कि अभी भी वो कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की कमेंट्री बड़ी कंपनीज ने दी है, जैसे इन्फोसिस ने अपना गाइडेंस बहुत तेजी से काटा है, टीसीएस ने भी बहुत कॉशियस स्टैंस अपने इन्वेस्टर्स को बताया, तो ये बात का संकेत है कि बड़ी आईटी कंपनीज जो है वो ये देख रही है कि डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगा। ऑल्दो सारी कंपनीज के पास पुराना ऑर्डर बुक काफी है, नए ऑर्डर्स के लिए समय लगेगा। और अगर आप शेयर्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अभी भी मौका है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करें। हो सकता है आपको अगले 3 यहाँ से और करेक्शन पे ये स्टॉक्स मिल सकते हैं, तो तभी निवेश का पॉसिबिलिटी रहेगी। अभी फिलहाल मुझे लग रहा है वो अंडर परफॉर्म। जी, अब रुपए के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में आज डॉलर के मुकाबले रुपया 82 रुपए 95 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 103.1 पर चल रहा था।
अब रुक करते हैं वैश्विक बाजारों का और सबसे पहले एशियाई शेयर बाजारों की बात करें तो आज एशियाई शेयर बाजार नुकसान के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.8% टूट गया, जापान का निकेई 1.5% लुढ़क गया और हांगकांग का हैंग सेंग 1.4% की गिरावट के साथ बंद हुआ। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.8% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.6% नुकसान में रहे। यूरोपीय शेयर बाजार भी लंदन के फुट्सी 100 को छोड़कर अंतर्दिवसीय कारोबार में आज बढ़त के साथ चल रहे थे। फ्रांस का कैक और जर्मनी का डेक्स दोनों 0.1% की मामूली बढ़त में चल रहे थे, हालांकि लंदन का फुट्सी 100 0.3% के नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था। Avinash, rupee weakening at 82 rupees and 95 paise. Two terms are nowadays being simultaneously used: de-dollarization and decolonization. Is that having an impact on the rupee? Yeah, I think the trend has started, but I think it's too small early now at this stage to say that de-dollarization will gain momentum. Take some time, but it's definitely a good move because India has propagated the use of the rupee as a for transactions with many countries. That is definitely going to obviously benefit the rupee. However, longer term, I think this will definitely be more prevalent. But in the near term, at least for the next 3 to 6 months, I think we may not see a major kind of volatility in the rupee dollar kind of value. Till that time, the dollar will be the mother currency, and I think the movement in the rupee will be dictated by the dollar. All right, let's wait and watch for some more time. A look at the US markets now. Wall Street's main stock indexes closed sharply lower yesterday after stronger than expected retail sales data stoked worries that interest rates could stay higher for longer. A fall in the US big banks' shares after a report that Fitch could downgrade some lenders also dampened investor sentiment. The Dow Jones Industrial Average declined 1%, while the S&P 500 and the Nasdaq Composite indices both plunged 1.2% each. So, US is out of the red, or still, how do you view the US markets? No, I think my guess is, the US markets will be dictated by what kind of inflation numbers the economy is going to throw. And plus, looking at the job and employment growth numbers, I think it's going to be a challenge for the Fed to, handle inflation. In fact, in the last, policy, Jeff Paul, who's the governor of Fed, has clearly stated that they will be going by pure data points. And if at all, the data points show that inflation is not coming down, then I think it's going to be a big challenge to cut interest rates. In fact, they have clearly said that 2% inflation is their target, and currently inflation is running around 4%. So I think it's going to be a long time before we see volatility and performance in the US markets improving. I think in case the Fed increases interest rates by another 25-50 basis points, that is definitely not good news for the US market. You could see a correction coming in there, but it's going to be a wait and watch till the month of September. All right. And now let's take a look at the oil prices. Well, oil prices were little changed today as investors weighed worries about China's embattled economy against expectations of tighter supply in the United States. In intraday trade, Brent crude was trading at $84.85 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $81 per barrel when reports last came in. How do you see the oil going, Avinash? No, I think oil prices have started rising after a long time, and I think this is definitely not a good sign. Nevertheless, India has made a very good decision. They acquired, cheaper oil from Russia as well as from some other countries. So I think going forward, it's going to be a challenge. If the oil prices rise, then it's going to obviously have an impact on our trade deficit number. As of now, the trend is increasing, but we have managed to, stock up inventories, which is more than adequate. Right. Requirements. Maybe going forward, it could be a little problem, but anything above $90-95 a barrel to be a problem area for India. और अब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा कारोबार में सोना आज 130 रुपए की गिरावट से 58,845 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहा था। सितंबर अनुमान वाली चांदी 245 रुपए की मजबूती से 70,200 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। And with that, we come to the close. Thank you, Avinash, for being with us. And friends, before we close, as a reminder of the headlines, central government approves PM e-bus Seva scheme with spend of more than 57,000 crore rupees, 10,000 e-buses to be deployed in 169 cities. Union government also approves PM Vishwakarma scheme with a financial outlay of 13,000 crore rupees to support traditional artisans and craftspeople. Centre gives nod to expansion of Digital India program with an outlay of around 15,000 crore
crore rupees, and key domestic indices witness modest gains. And well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Vishal Sharma signing off. Namaskar. This is Akashvani, the news.